discuss, we can talk about what is tree. Hash table में जितना पढ़ना चाहिए था, hash table is a data structure. Don't worry, we have learned everything. So basic as well as advanced, जितना आपके सिलेबस में था, जितना मुझको आता था, उतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि वो क्या क्या था, कैसे कैसे था, और कौन कौन से मैकेनिज्म्स है, ऑल दैट. इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर इतने ही होते हैं हैश टेबल के. व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ हैश टेबल? What are the interview questions of hash table? What is collision? What are the collision handling mechanism? That's it. इसके अलावा हैश टेबल में इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होते. इंटरव्यू क्वेश्चन हैश टेबल में यूजुअली जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, कोडिंग राउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बहुत बार देखे हैं, कोडिंग राउंड के क्वेश्चन में हैश टेबल अच्छा खासा यूज होता है. कोडिंग राउंड के क्वेश्चन में हैश टेबल अच्छा खासा यूज होता है. एंड जहां तक मुझको पता है, शायद मैंने कोई तो असाइनमेंट ऐड किया होगा. वी हैड एडेड सम असाइनमेंट. मैंने कोई हैश टेबल का असाइनमेंट दिया हुआ है क्या? मुझको भी याद नहीं है. Yes, some assignment is there. If that assignment is there, you should go ahead and you should try to solve that assignment. I guess कुछ तो word count या ऐसा कुछ तो मैंने प्रोग्राम दिया होगा. Is it there? Load all data. हाँ, in a user defined hash table. Into user defined hash table, ये भी hash table का ही क्वेश्चन है. So ये आप लोग कर सकते हो. That is absolutely possible. Load employee objects data into the hash map. चलो ये भी आप लोग कर सकते हो. इट इज ये, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये हैश टेबल और ट्री ये दोनों का मिक्सचर है. यहाँ पर आपको यूजर डिफाइंड हैश टेबल यूज करना है, यहाँ पर आपको जावा का रेडीमेड हैश मैप यूज करना है. सो इट इज देयर. एंड इफ यू वांट, प्रोबब्ली आई कैन ऐड वन मोर क्वेश्चन. I can add one more question. This is a very popular question, many time asked into the like kind of a एग्जाम्स. ये कोडिंग में भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, और काफी बार ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. दैट व्हाट इज दैट? count count number of occurrences for each word in the file. Count number of occurrences of each word in the file. So file में, file it is like a text file obviously. So आपको क्या करना है, आपको text file line by line read करना है. टेक्स्ट फाइल आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है, उसको स्प्लिट करना है, मल्टीपल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, और कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, आपको उसका रिजल्ट देना है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ योर इनपुट फाइल, फॉर एग्जांपल इफ योर इनपुट फाइल इज समथिंग लाइक दिस, रेड ग्रीन ब्लू, under let's say red green, it is there. And another one I can say let's say blue red, something like I'll add one more, let's say green. If it is there, now what output result I'm expecting? The output result that I'm expecting, the output result that I'm expecting is यहाँ पर red कितनी बार आया है? Let's say 1 2 3 4. So I'm saying that red should be like 4. You continue further. green कितनी बार आया है? Let's say 1 2 3 3 times. And let's say blue कितनी बार आया है? Blue कितनी बार आया है? Let's say 1 and 2 times. So this is something the output that I'm looking for. और इस ये करने के लिए अगर आपको हिंट चाहिए, हिंट इज समथिंग लाइक दिस. हिंट इज समथिंग लाइक दिस. यू हैव गॉट हैश टेबल करो, हैश मैप यूज करो. यू कैन यूज अ रेडीमेड वन. एंड स्ट्रिंग टू इंटीजर, you can simply have like a string to integer. Every time you can load it. If already existing corresponding already existing value होगा, तो आप उसके अंदर +1 करो और वापस से उसको रिप्लेस कर दो. सो यहां पर आई एम सेइंग दैट की इज इक्वल टू key is equal to word, key is equal to word, and value is nothing but the count. That is what all you can do. तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा हर बार for every word. If it is already there, get the value. Once you get the value, do +1 and then add it there. Is that okay? This is what a kind of a small assignment that you can try it. ये आप लोग कर सकते हो. ये एक असाइनमेंट है, वो करो. इंटरव्यू में हैश टेबल के बेसिक कंसेप्ट जो पूछे जाते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, राइट? और कुछ पूछा है क्या?
माधुरी इज आस्किंग अबाउट डायरेक्ट एड्रेसिंग. माधुरी, जो आपने पहला एग्जांपल देखा था, इट वाज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट एड्रेसिंग ओनली, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, कि जहां पर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और वहां पर वैसे भी कोलिजन नहीं हो रहा है. आई बिलीव दैट दिस इज समथिंग यू कॉल इट एज डायरेक्ट एड्रेसिंग, राइट? सो जो रिलेवेंट चीजें थी दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? Good. Should we start with trees then, with your kind permission? So let's move further and we talk about what is tree. Again, you please ensure that you attend the whole session. Because by the time we reach to the end of the session, we will be implementing the tree today. The basic tree we will start implementing today. And if you understood the implementation of a basic tree, then and only then probably you are eligible for the tomorrow session. Because tomorrow session we will do the advanced functions. अगर से अगर आपको बेसिक लिंक लिस्ट बनाने नहीं आता है तो आप लोग लिंक लिस्ट रिवर्स के बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता. ऑन द पैरेलल लाइन, अगर आपको बेसिक ट्री बनानी नहीं आएगा तो ट्री के जो मैं आगे वाले एडवांस फंक्शन आपको बताऊंगा कि ट्री ऐसे होता है, फिर ट्री के ऊपर ऐसे रोटेशन कर सकते हैं, या फिर ट्री को हम लोग ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. सो इफ आई स्टार्ट टॉकिंग एनीथिंग, इट विल बी सुपर बाउंसर्स फॉर यू. सो यू इंश्योर दैट यू अटेंड द होल स्टफ. एंड जब लैब में जाओगे तो पहले ट्री का प्रैक्टिकल खत्म करना और बाद में हैश टेबल करना. जब लैब में जाओगे तो पहले ट्री का प्रैक्टिकल खत्म करना, क्योंकि कल के लेक्चर के लिए ट्री आना बहुत जरूरी है. तब तक आप लोग बचा हुआ नहीं कर पाओगे. दैट इज द रीजन द लेक्चर ऑफ ट्री इज ब्रोकन इनटू द टू पार्ट. द फर्स्ट पार्ट where we will do the basic implementation of a tree, and then tomorrow's lecture we will see the advanced function of trees. So by the way, what is tree? What is tree? What is tree? I guess you must have seen tree in many places. So you find that this is like a tree where we have got something you call it as a root, and then for the tree we have got like a branches, and the branches again have further sub branches. As you see, you have got sub branches, and then you again have further sub branches, and at the end what you are having, for at the end we are having something, what do you call it as a leaf, something like this. Oh, exactly like this. तो मैं ये कह रहा हूँ, तो this is what a tree is. Yes, I said that this is what a tree is. But the same tree, तो सर यहाँ पर ट्री कैसे होता है? डेटा स्ट्रक्चर का ट्री थोड़ा सा उल्टा होता है. डेटा स्ट्रक्चर का ट्री कुछ ऐसा होता है, where we say that it goes something like this, where the root is probably on the top. Root is on the top. इसको हम लोग कह रहे हैं root. Very good. And then these are nothing but your branches. These are nothing but your branches. And then somewhere down the line, what you see, these are nothing but your leaves. These are nothing but your leaf. It is exactly same concept that you call it as. सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये उल्टा हो रहा है. यहाँ पर root is on the top. Then for the root there are branches, and the branches has got sub branches. Sub branches has got even sub branches, and at the end we have got something called a leaf. Is that clear? Now this is something that we need to understand what the tree is. Obviously हम लोग ऐसे tree draw नहीं करते. How do we draw the trees? If we draw tree something in a better way, we draw it something like this. Let's say A, B, C. Here I'm saying that A is like a root, and the root has got 3 branches. These branches, इसको branches नहीं कहते, nodes कहते हैं. So it can have even further branches, E, F, G, H, I can say I, J, K, L. Okay, it is there. And then again you continue further, M, N, O, P, Q, whatever. And I'm just writing somewhere. Now you find that यहाँ पर ये जो starting का जो node है, this is something you call it as a root. ये जो starting का node आपको जो दिख रहा है, it is called as a root. And once it is called as a root, what definition it is saying? Read the definition. The definition it is trying to suggest is something like this. Tree is a finite set of nodes with one specially designated node called as a root node. With a specially designated node called as a root node that I'm able to see. Okay, that is good. The remaining nodes of partition, remaining nodes are partitioned into disjoint sets T1 to Tn, where
each of those sets is a tree. Okay, so what exactly it means, let me draw it diagrammatically so that you appreciate it more. जो बचे हुए elements हैं that I can again divide into the partitions. बचे हुए elements I can again divide into the partitions so that each partition itself is a tree. Again you find that this is T1, this is T2, this is T3, and for this T1, T2, T3 again you see that oh this is a root, and then root के अंदर वापस से there are subtrees. This is second root, again it is a subtree, and the D that is again third root and that is again a subtree. So हम लोग कह रहे हैं, read the definition once again. What is the definition? Tree is a finite set of nodes with one specially designated node as a root node. This is specially designated node as a root node. Okay, good. The remaining nodes are partitioned into disjoint set T1 to Tn. If this is let's say T1, this is let's say T2, this is let's say T3. Disjoint set. Disjoint मतलब जिसमें कुछ भी common नहीं है. They are like independent of each other. So इस तरह से आप लोग उसको divide कर सकते हो so that each one is a tree in itself. You continue further. T1 to Tn are called as a subtrees of a root. A T1 to Tn, they are called as subtrees of a root. Is the definition clear? Is the definition clear? Obviously जिसके एंड में जिसको आगे वाले ब्रांचेस नहीं है, if you do not have further branches, then these one you start calling them as a leaf node. These are the leaf nodes. Leaf node वो होते हैं जिनको आगे branches नहीं है, they are all leaves. They are all leaf. So these are called a leaf node. Let us continue further. Some of the basic terminologies we want to collect it together. Go ahead. The very first thing, node. What is a node? ये आपके linked list के node जैसा है. It is an array storing information and branches to the other node. Item storing information and branches to the other node. So हर एक इसके अंदर दो चीजें होगी, एक होगा डेटा एंड सेकेंड होगा ब्रांचेस इन द सेंस पॉइंटर्स और इसे रेफरेंसेस ऑफ द अदर नोड. जैसे लिंक लिस्ट में था वैसे ही यहाँ पर भी है. You continue further. What is a null tree? Null tree, it is a tree with no node, or simple भाषा में you can say it is an empty tree. In a simple language, you can say it's an empty tree. You continue further. Leaf node, it is a terminal node of a tree and does not have any node connected to it. Leaf node is a terminal in the sense last node, कि जिसके आगे और कोई एक्स्ट्रा नोड नहीं है. सो ये मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर MNOPQRS, ये सारे ऐसे नोड है जिनको फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं है. सो आई एम सेइंग दैट these are the leaf nodes. Okay, you continue further. You have got next thing, degree of a node. What is degree of a node? Number of subtrees of a given node. Just take a look at this and can you quickly tell me what is degree of L? Take a look at the diagram and can you quickly tell me what is the degree of L? इसका डिग्री कितना है? L का डिग्री नंबर ऑफ सब ट्रीज, इसके टोटल कितने चाइल्ड नोड कितने हैं? दो चाइल्ड नोड है तो इसका डिग्री 2 है. नो प्रॉब्लम. अच्छा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डी? What is degree of D? Or degree of D is equal to 4. Okay, all right. And wait for a minute. What is the degree of B? Degree of a B is going to be, let's say, 3. Degree of B is going to be 3. Wait for a minute. What about degree of E? Degree of E, there are no child node connected to that. Degree is equal to 0. So you are able to see that. Nothing great into that. Continue further. By the way, what is the degree of a tree? The degree of a tree is maximum degree of the node in a tree. So can you take a look at this tree and tell me what is the degree of a tree? Degree of a tree, you always find that it is degree of the maximum. So this is going to be the degree is equal to 4. That I am able to see it. Nothing great. So these are the basic terms. Don't worry, there are few more terms coming up. We have got concept like a parent node. What is the parent node? The node having other nodes connected to it. ऐसा नोड जिसको कोई और नोड कनेक्टेड है. सो हमारे पास दो ही टाइप के नोड हो सकते हैं, या तो लीफ नोड हो सकते हैं या फिर पेरेंट नोड हो सकते हैं. दैट इज गुड.
We have got like a sub siblings. What is sibling? The children of the same parent, or children of the same parent. You can go back, you can take a look at this, you can take a look at this, and can you tell me some example of siblings over here? In this case, some example of a siblings over there. Yes, you can say that OPQ, these are the siblings. OPQ, these are the siblings, or for that sake, BCD, these are the siblings, or for that sake, MN, these are the siblings. So the siblings are nothing but nodes of the same parent. Okay, that is good. You continue further. Descendants. What is descendants? All the nodes which are reachable from a given node. Okay. So descendant हर एक node के होते हैं. So you talk about like for example, you given a node J. हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते. हम लोग ऊपर नहीं जा सकते. तो J के नीचे कौन कौन से नोड है? So J के डिसेंडेंट कौन कौन से हैं? J के डिसेंडेंट है फॉर एग्जांपल J के डिसेंडेंट है O P Q. वो तो वैसे डायरेक्टली जा सकते हैं, नो डाउट ऑन दैट. लेट अस टॉक अबाउट लाइक अ सेकंड एग्जांपल. सी के डिसेंडेंट कौन कौन से हैं? सी के डिसेंडेंट कौन कौन से हैं? सो फ्रॉम सी यू कैन गो टू द एच, एंड फ्रॉम एच you can go to the m and n as well. So I would say that descendant is not child. Child तो वैसे child तो descendant होता ही है, but descendant मतलब child or child child या फिर child child child. So this way you can continue further. So these are all the nodes which are reachable. ये all word important है. I'm not saying that only child. Okay, you continue further. You talk about ancestor. What is ancestor? All the nodes along the path from the root to that node. All the node in the path from the root to that node. Like given example, suppose you are talking about M. अब M के ancestors कौन कौन से हैं? अगर आपको M to A जाना है, M to A जाना है, तो हम लोग कैसे कैसे जा सकते हैं? H, C and A. These are the ancestors of M. You can talk about like another example. Let's say that who are the ancestors of Q? Ancestors of Q, Q, it is J, it is D, and it is A. Oh, these are the ancestors of this. So this is a concept. वैसे ancestors and descendant ये कोई नए concept नहीं है, normal English language के concept है. In a family tree also we are using the same words. Yes, descendants and ancestors. Descendants and ancestors. So that is pretty clear. Let's go ahead. And now here comes the confusing concepts. The confusion begins over here. So welcome. And before I start telling you something and you start telling me something, let me tell you the concepts on this particular slide, they are a bit confusing, or rather I would not say confusing, they are like more of controversial. It's not confusing, it's like a controversial. और ये concepts जो controversy है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है. आई एम नॉट द वन हु इज एडिंग कंट्रोवर्सीज. ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, जिनके अच्छे अच्छे दीज आर लाइक गुड ऑथर्स, जिनके बुक्स है, ये उन्होंने क्रिएट किया हुआ कंट्रोवर्सी है, और वो भी स्टैंडर्ड लोगों ने. सो लाइक यू रीड द सहानीज बुक, देयर इज समथिंग डिफरेंट. You read the, what is that, you read another book, what is that, Tenenbaum book, they have got a different concept. You find out some other author and they have got something different concept. अब टू बी फ्रैंक, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. आई डू नॉट वॉन्ट टू फॉल इन टू द, सर इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. मैं बहुत छोटा इंसान हूं, आई एम ऑर्डिनरी पर्सन, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं. सो आई एम नो वन टू मेक अ कमेंट ऑन देम कि सहानी इज करेक्ट और टेनेमम इज करेक्ट और डोनाल्ड नोथ इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. आप लोग उनसे बड़े हो सकते हो, यू कैन ऑलवेज फॉल इन टू द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड कैन पुट योर ओन ओपिनियन. मेरे अपने कोई ओपिनियन नहीं है. दीज आर समथिंग फ्यू डिटेल्स दैट आई हैव सीन, जो मुझको लगा बाय रीडिंग योर सिलेबस कि आपको जो नियर बाय जो क्लोज डेफिनेशन होना चाहिए, जो डेफिनेशन ज्यादा से ज्यादा सीडैक के पेपर्स में यूजुअली लोग कवर करते हैं, मैंने वो लेने की कोशिश की है. मैंने वो लेने की कोशिश की है. अगेन नाउ यू गो टू लाइक एवरी वेबसाइट इज डिफरेंट. They are referring the different books, they might come up with their own questions, and then I'm not responsible for their answers. I hope I just made it very clear. तो इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मैं जो बता रहा हूँ, this is what something I'll be following through my lectures.
आई होप दिस इज ऑल राइट एंड नाउ आई बिगिन विद द टॉपिक. मेरे को पता है कि लोग, ये टॉपिक शुरू होता है तो लोग ऐसे अपने एक्सप्रेशन डालने शुरू करते हैं जैसे वो टेनम्बम और सहानी इनके घर पे ट्यूशन लेने के लिए आते थे. सो डोंट डू दैट, मेरे घर पे नहीं आते. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. वी हैव लाइक अ लेवल ऑफ अ नोड. व्हाट इज लेवल ऑफ अ नोड? Conceptually, level indicate the position of the node in the tree hierarchy. So tree के hierarchy में level of a node indicate the position of the node in that hierarchy. And how I can say that? I can simply say that in general, the level of any node is level of parent plus one. A level of parent plus one. Okay, that is something we can talk about. And then level of root is considered to be one in many of the places. I said that many of the books, or like more commonly people consider level of root is equal to 1. Let me draw some diagram. Again, let me draw some diagram. Again, A, B, C, D. We have got E, F, G, H, I, J, K, L. अब बस बहुत हो गया. All right. And if it is so, let us begin from here. Let us begin from here. Level of a node. A level of a root is 1. Level of root is 1. If I'm saying level of root is 1, so what is the level at this A ka level is 1. So sir, level of its child. A level of its child, obviously that plus 1, it becomes 2. And level of its child, that plus 1 is like a level 3. And level of that is nothing but 1 more plus 4. So what I'm trying to tell you is that जितना लेवल कम है उतना आप लोग कंसिडर कर सकते हो दिस इज नियरर टू द रूट, और जितना लेवल ज्यादा है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज नियरर टू द लीफ, वो इट इज अवे फ्रॉम द रूट. वी कैन से दैट इट इज अवे फ्रॉम द रूट. दिस इज समथिंग वी कैन कंसिडर. सो I'm talking about level of a node. I'm talking about level of a node. Amit, this is visible to you. एंड यू सी दैट ए का लेवल है 1 तो वो रूट ही है. अगर बी का लेवल है 2 मतलब इट इज इमीडिएटली नियर बाय ए. बट अगर आप लोग चेक करें एम, एम का लेवल है 4, ए लेवल 4 है मतलब वो ए के नजदीक नहीं है, वो ए से दूर है, वो रूट से दूर है. आई गेस डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंड दैट इज द रीजन आई से दैट इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द नोड इन द हायरार्की. सो जितना लेवल कम उतना नियर टू द रूट, जितना लेवल ज्यादा उतना अवे फ्रॉम द रूट. दैट्स इट, सिंपल कंसेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. देन यू आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देन व्हाट इज डेप्थ? और डेप्थ, अभी हम लोग ट्री, हमारा उल्टा ट्री है तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं. हमारा ट्री उल्टा है, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं. अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, लेट मी जस्ट कंटिन्यू फर्दर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ, the number of nodes from the root to that particular node. कुछ लोग यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कहते हैं, कुछ लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कहते हैं. इट इज अप टू यू, वॉट एवर यू वांट टू से, नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ नोड्स फ्रॉम द रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड. और अगर आप लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस के हिसाब से जाओगे तो ए से ए तक कितने ब्रांचेस हैं? अंडरस्टैंड दैट ए से ए तक कोई ब्रांच नहीं है, सो इट विल बी 0. बट यहां से यहां तक कितने ब्रांचेस है? आई गेस देयर इज वन वन एज इन बिटवीन, और यहां से यहां तक देयर आर टू एजेस in between, और यहां से यहां तक there are three edges in between. Okay, it is there. So the depth of root is 0 and the level, we can say generalized formula, we can simply say that level is equal to depth plus 1. ये आपको दिख ही रहा है. अगेन कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ऐसा मुझको नहीं लग रहा है. इट इज वेल रीडेबल, राइट? एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर. लेकिन जो अगला वाला है ये थोड़ा सा अलग है. ये अगला वाला है, ये थोड़ा सा अलग है. इन लेवल और डेप्थ दे आर क्वाइट सिमिलर. हम लोग ऊपर से उस नोड की तरफ देख रहे हैं. अब जब मैं अगला वाला कह रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, हाइट हम लोग नीचे से उस नोड की तरफ देखेंगे. नीचे से ऊपर जो मेजर किया जाता है दैट इज हाइट, और ऊपर से नीचे जो मेजर किया जाता है दैट इज डेप्थ. फिर से एक बार, जो नीचे से ऊपर मेजर किया जाता है दैट इज हाइट, और जो ऊपर से नीचे मेजर किया जाता है दैट इज डेप्थ. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. एंड विद दैट इन प्लेस, height, number of nodes from the node
to its deepest leaf. Deepest leaf. So we are talking about in like a reverse direction. A reverse direction. So what I'm saying is that जो सबसे एंड में तो हम लोग कह सकते हैं इसका हाइट इज आई कैन से इट इज जीरो. इसका हाइट है इट इज जीरो. ओके दैट इज गुड. यू कंटिन्यू फर्दर. यू कंटिन्यू फर्दर. इसका हाइट है दैट इज वन. दैट इज वन. इसका हाइट है दैट आई कैन से लेट्स से टू. करेक्ट. अगर विद दिस पाथ अगर हम लोग जा रहे हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इसका हाइट है टू. फॉर दैट सेक टेक अ लुक एट दिस. इसका हाइट है लेट्स से जीरो. इसका हाइट है जीरो क्योंकि इसके नीचे और कोई नहीं है. इसका हाइट है लेट्स से वन. वन. I'm just trying to show you different examples. I'm continuing further. See it carefully. इसका हाइट है जीरो. इसके नीचे कोई नहीं है. इसके नीचे कोई नहीं है. What about height of this? अगर आपने ठीक से नोट किया इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है लेकिन इसके राइट में कुछ तो है. सो इसका मतलब इसका जो डीपेस्ट लीफ जो है उसके राइट में. डीपेस्ट लीफ अगर उसके राइट में है सो दिस विल बी प्रोबेबली वन. ओके दैट इज गुड. इसका हाइट कितना है? इसका हाइट प्रोबेबली इट विल बी अगेन जीरो. ओके दैट इज गुड. व्हाट इज द हाइट ऑफ डी देन? इसका जो लेफ्ट है ए लेफ्ट का हाइट वन है. इसका राइट का हाइट जीरो है. इन दोनों में से जिसका भी ग्रेटर होगा दैट ग्रेटर प्लस वन. दैट ग्रेटर प्लस वन. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इसका इसके दो लीफ है. एक लीफ यहां पर है. एक लीफ यहां पर है. जो डीपेस्ट वाला लीफ है जो डीपेस्ट वाला लीफ है उससे जो डिस्टेंस आएगा दैट इज रेफर्ड एज हाइट. जो डीपेस्ट वाला जो डिस्टेंस है दैट इज रेफर्ड ऑन टू दिस. यस हाइट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन अ रेफरेंस. आपके लेफ्ट में कौन है आपके राइट में कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अच्छा कोई मुझको बताएगा विद दिस एग्जांपल ए का हाइट क्या होगा? ए का हाइट क्या होगा? आपके जितने सारे चाइल्ड है आप लोग फाइंड आउट. जितने सारे चाइल्ड है और रुको ये मैंने गलत लिखा. इसका हाइट टू होगा. हाँ गोइंग अहेड. जितने सारे चाइल्ड है उसमें से जो भी मैक्सिमम चाइल्ड होगा दैट प्लस वन दैट कम्स आउट टू बी हाइट ऑफ दिस. सो हाइट विल बी ऑलवेज कि आपके जितने सारा जो भी डीपेस्ट लीफ नोड है वहां से कंपेयर होगा. वहां से कंपेयर होगा. बाय द वे जो आपका लास्ट नोड है ये लास्ट नोड का हाइट अगर वन है कोई मुझको बताएगा विद दिस ट्री अगर मैं ये वाला ट्री कंसीडर कर रहा हूं इस ट्री में इतना ही ट्री है. मेरा इतना ही ट्री है. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस? अगर मेरा इतना ही ट्री है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस? यस हाइट ऑफ दिस विल बी हाइट ऑफ दिस विल बी जीरो. इट इज सिंगल नोड. एक अगर सिंगल नोड का हाइट अगर जीरो है कॉमन सेंस टू बी फॉलोड. इफ इट इज एम्प्टी ट्री इफ इट इज एम्प्टी ट्री इफ इट इज नल ट्री तो नल ट्री का हाइट मुझको कितना काउंट करना चाहिए? अगर सिंगल नोड का अगर हम लोग जीरो काउंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी जीरो. दिस हैज टू बी काउंटेड टू बी माइनस वन. This has to be counted to be minus 1 and that is something written over here. Height of node is equal to height of its child plus 1 and height of empty tree is counted as minus 1. Height of empty tree is counted as minus 1. By the way, what is the total height of a tree? Total height of a tree. Total height of a tree is nothing but height of the root of that particular tree. Height of root of that particular tree. That is something we understand. मैं फिर से बता रहा हूं लेवल कंसेप्ट डेप्थ कंसेप्ट एंड हाइट कंसेप्ट दिस कंसेप्ट्स आर बिट कंट्रोवर्शियल. कि कुछ लोगों का कहना है कि हाइट जीरो से नहीं काउंट होना चाहिए वन से काउंट होना चाहिए. कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं वो जीरो से काउंट होना चाहिए. एंड देयर विल बी कंट्रोवर्सीज. तो सर इसमें प्रोग्राम में फर्क नहीं पड़ता क्या? टेक्निकली स्पीकिंग इससे प्रोग्राम के ऊपर कोई असर नहीं होता. सर क्यों नहीं असर होता? क्योंकि ये जो हाइट का कंसेप्ट है ये यूजुअली हम लोग बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं. हाइट का कंसेप्ट हम लोग बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं और बैलेंसिंग में लेफ्ट का हाइट और राइट का हाइट हमें कंसीडर करना पड़ता है. दोनों का डिफरेंस कंसीडर करना पड़ता है. तो अगर अगर आप लोग जीरो से काउंटिंग कर रहे हो या आप लोग वन से काउंटिंग कर रहे हो डिफरेंस इज गोइंग टू स्टिल रिमेन रिलेटिवली सेम. एंड सिंस डिफरेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम तो आप लोगों ने प्रोग्रामेटिकली सर मैं एक्चुअली सर मुझको कोड करना है तो कोड में मैं क्या ले लूं? कुछ भी ले लो. योर आंसर द कोड द बैलेंसिंग कोड इज स्टिल गोइंग टू रिमेन करेक्ट. ये प्रॉब्लम जो भी होता है वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको वो एमसीक्यू एग्जाम में प्रॉब्लम होता है कि एमसीक्यू में किसको जीरो कहना है और किसको वन कहना है. जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे यू नेवर बॉदर वेदर द हाइट इज जीरो कंसीडर करना है या हाइट वन कंसीडर करना है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. करेक्ट. So these are nothing but the trees and these are concepts of tree we talked about. And now
वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द हाइट ऑफ ऑल द नोड्स. मैंने ऑलमोस्ट सारे नोड्स का मैंने हाइट बता दिया है और कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने बता दिया है. आई होप देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन फॉर दैट. राइट, गोइंग अहेड. गोइंग अहेड, एक काम करते हैं. व्हाट विल डू इज दैट वी कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज. मैं सारे टाइप के ट्री नहीं बताने वाला हूँ. वी विल फर्स्ट ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, एंड वी विल गो ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री. एक बार हमको बाइनरी सर्च ट्री का प्रोग्रामिंग आ गया, हमारा प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा, फिर मैं बचे हुए जितने टाइप्स ऑफ ट्रीज है उसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे. आई होप दैट इज ओके. सो अ ब्रेक for 10 minutes and then we'll continue.